तो 2 मिनट शांत बैठे, आंखें बंद कर। जस्ट क्लेंसिंग द सोल, आत्मशुद्धि। मनः प्रसाद सौम्यत्मं मौनम आत्मविनिग्रह। देवादिदेव वासुदेव, गुरुओं के गुरु, द लॉर्ड ऑफ लव ऑलमाइटी, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, जो अपना सारा वैभव जिसे कहते हैं उस गीता नामक ग्रंथ में कहते हैं, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। जो आत्मा के शांति का अनुभव पाना हो अर्जुन, जो मेरा प्रसाद भगवत प्रसाद पाना हो, तो शांत मन में ही प्राप्त होगा। अपने मन से ही प्रसाद प्राप्त होगा। बाहर से प्रसाद, दर्शन, स्पर्शन, उससे इतना लाभ, उतनी चिर शांति, लॉन्ग लास्टिंग डीप पीस ऑफ माइंड shall not be achieved from external stimulus, external circumstance, external blessings, as much as from within. मन का प्रसाद, अपने आप पर कृपा। मन प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्य शब्द कहा, सुंदर शब्द, शांत, माइल्ड, low key. सौम्य is low key, pacifying, शांति देने वाले शब्द, शांति देने वाले विचार, शांतिपूर्ण वातावरण, शांत मन, शांत वाणी, शीतल वाणी। वाणी ऐसी कहिए मनवा शीतल होए। आप भी शीतल हो, औरों को भी शीतल करे। Like the cool summer breeze, like the cold water in a thirsty throat in the hot summer. सौम्य। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम। Less is more। मौन का सराव करे। वाचिक मौन, मानसिक मौन, वैचारिक मौन, इंद्रियों का मौन। मौनम आत्म विनिग्रह, निग्रह करे, restrain, control। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। सिद्ध असिद्ध निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्चते। जो सत्व में स्थिर होना हो, to securely lodge in goodness, goodness of the Lord, good for the sake of goodness। तो सिद्ध हो चाहे असिद्ध हो, निर्विकार, undisturbed, undistorted, undiseased, regardless of the results, regardless of the outcome, unaffected by what happens next। अर्जुन वह मेरा सात्विक करता है, उसे प्रसाद की प्राप्ति होती है।
और फिर उस प्रसाद से क्या होता है, भगवान कहते हैं उसी गीता में दूसरी जगह 18वें अध्याय में, प्रसादे, दूसरे अध्याय में सांख्य योग में, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते। जो अपने भीतर से प्रसाद प्राप्त कर लेता है, That is the eternal, everlasting शांति का प्रसाद। उससे सब दुखों की हानि होती है, सब दुख नाश होते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस उपजायते। फिर भीतर से प्रसन्नता का रस, the fountain, the spring of joy is discovered within, that needs no praise, no objects, no stimuli, nothing special. Ever running spring of joy that's hidden within is discovered. Prasanna chetasa yashu buddhir pariavatishtete. And then that spring showers joy in every aspect of that sadhak. प्रसन्न चेतसायाश, उसकी चेतना ही प्रसन्न हो जाती है। The consciousness is enlightened and illumined in joy. Every word then, every action and every thought is steeped in deep, lasting joy. Buddhi pari avatisthate, and then that resolute mind securely anchors in the pure goodness, in the purity of the soul. तो यही हमारा गंतव्य स्थान है, उस दिशा में हम प्रवास कर रहे हैं। Never losing sight of our destiny, taking one resolute step after another, holding each other's hand, encouraging each other, empowering one another, with firm faith in our chest and the good Lord's name in our hearts. We continue the next phase of our journey, getting ever closer to the God of gods, who is nowhere to be found but within, right here, right now. And no reason to wait, nowhere else to go. I can hold His hand right now, where I am, as I am. तो शांत मन से ध्यान दे, ये सब किस लिए कर रहे हैं? क्यों इतनी भागा दौड़, इतना सामान इकट्ठा, किस प्राप्ति के लिए? ये सब जो प्राप्त होकर भी अप्राप्त होने वाला है, उसको इकट्ठा करने में लगे हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान कहते हैं। राज विद्या राजगुह्य योग, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते। Those who prioritize me in their lives, in between every spare moment, those who prioritize मेरा चिंतन, मेरा ध्यान, मेरे विषय में विचार, अर्जुन, अनन्य चिंतन,
Ye jana pari upasate, those who worship me like that in their consciousness, wherever they are, whatever they're doing, however the situation might be. I come forward and take responsibility for them. I bring them what they lack, and I preserve for them what they will need in the future. जो मेरा चिंतन करता है उसकी सारी चिंता का मैं वहन करता हूँ. You think about me and I will think about everything that you will need, is the promise of the Lord in the Gita. Just as a child would say, Dad, this is what I want. Mom, can I have this? Then never mind कहाँ से पैसे लाए, क्या करना पड़े, कैसा करे. प्रेम में वश होकर माता रह न सके अपने नन्हे के लिए, ऐसे ही प्रेम वश भगवान माताओं की माता, पिताओं के पिता, गुरुओं के गुरु, प्रेमियों के प्रेमी, सुहृदों के सुहृद, the greatest well-wisher of all times, cannot help but run to the rescue of the one with uncontaminated, pure love, selfless love, for the source of all love. भगवत प्रेम में ही सारी शुद्धि है. In the love of God alone lies all purity, all cleansing, all charity, all pilgrimage, all sadhana, ultimately culminating and manifesting in the form of love of God at all times. आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, वेदों ने कहा सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति. Just as every drop falling from the sky eventually find its way to the ocean through the tributaries and the lakes and the rivers, so does all worship, hey seeker, finds its way to that Keshav, Rishikesh Bhagwan, Sri Krishna. सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका जीवन सुखी हो, स्वस्थ हो, सम्मानित हो. सबको प्रेम का अनुभव हो, सबको प्रेम प्राप्त हो, सब प्रेम दे सके. इस प्रार्थना के साथ as Saint Francis of Assisi in Italy centuries ago repeated, use me, Lord, to glorify your name. I have myself to offer and I will give you my all. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev. This I offer to you, the host family. देखो फिर से मत कहना घंटे 2-4 घंटे निकल जाएंगे. Then I really have to work hard to. I'm just kidding. To hold back because this is the favorite part of my own favorite. आंखें बंद करके शांत भगवान के चिंतन में फिर मुश्किल हो जाता है निकलना उससे बाहर, है ना. मेरे लिए तो यही समाधि है. मेरे लिए वो समाधि काम की नहीं जो आंख बंद के you lost everything. The best form of samadhi for me in my experience is when we're steeped in love, so much love that it's hard to come out of it. डूब मरने चले गए, है ना.
कितना शुभ दिन हो जिस दिन हम मर जाए, जिस दिन मैं मर जाऊं, केवल वो रह जाए, तू ही तू. Is in all this sadhana for that, जो मैं कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं हम लोग, the limited, जिस दिन वो खत्म हो जाए, the glorious day of all, when only he will remain and I will be lost. So thank you for the opportunity. हम लोग दूसरे अध्याय में थे. कोई वैसे अदरवाइज स्पेशल डे तो नहीं है ना कोई? इज देयर एनी? ओके, हाँ, राइट. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर. गुरु के लिए भी कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई. जो गुरु वही जो निस्वार्थ होकर अपने पास कुछ न रखे, सब का सब दूसरों को दे दे, है ना. माओं की माँ, ऐसे गुरु का स्थान, ऐसे हनुमान जी जो राम जी के भी काज जिनके बिना नहीं हो पाए. सो जय हनुमान जी. ओम नमः शिवाय. शिव जी के अवतार. हम लोग दूसरे अध्याय में थे. पिछली बार शायद एक ही श्लोक हो पाया था. आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम व्हाट वी डिड was we connected the second chapter with the 18th chapter. Second chapter because Sankhya, that's when the real भगवान जो वाणी प्रारंभ होती है दूसरे अध्याय में शुरुआत होती है. पूरी गीता दूसरे अध्याय से वास्तविक गीता शुरू हुई है ना. कुतस्त्वा कश्मलमिदम. The first word that God utters in the Gita is kutasva. Like why? What, for what purpose? For what reason? We've talked about this before. As if to signal to us that we must identify our purpose. If he chose purpose as the first word in his sermon, then that must be purposeful. There must be a reason for it. And my understanding of that is that it's like right off the bat, what is the purpose in my living? What is the purpose of my anything that I do, what I say? है ना. Purpose के बिना, जैसे मैंने पिछले सत्र में कहा था, George Harrison, one of the Beatles boys, had famously said, if you don't know where you're going, any road will take you there. Wherever you're going, you don't know where you're going, so any road will take you there, है ना. तो where do you want to go? It's really important. ये जीवन समाप्त होने से पहले, what do I want to achieve? As if to signal that, he starts the Gita with Kutastva, है ना. So ऐसा करते करते हमने काफी प्रोग्रेस किया सेकंड चैप्टर में. Before starting in the next slok, I would like to thank Rajesh Bhai again publicly I was very impressed with his professional competency. Within minutes, he solved my problem and made me pay more than I thought I would want to pay by way of taxes, but protected me in that process, obviously. So again, Bhaiya, I appreciate it, and I'd like to share with everyone that I know that if you're looking for a super competent professional, I know someone now. So thank you again for your time and your expertise, and thank you for the opportunity here also. तभी तो थोड़ा समय रहेगा. दो बातें हैं आज. एक तो I want to share something personal in the beginning of the session, and then at the end of the session I also want to share something. So in the beginning I want to share that today is my birthday. Yeah, thank you. So I brought some gifts. I have been following for a number of years ये Blue Mountain Journal, जो गीता अंग्रेजी में माधी पढ़ाती है बच्चों को, वो इनकी होती है. एकनाथ ईश्वरन करके, he was a Fulbright scholar, he's an English professor at Berkeley, California for 35 years. He's no more, but he established a very effective institute called Blue Mountain Press. I don't particularly follow him as a guru रूप में नहीं, लेकिन उनका प्रशंसक को I really do admire. He passed away in 1993, I think. But some of his, I brought some things to distribute, like feel free, I think you will like, especially the English, speak like English aligned people would find it really useful. And yeah, there's nothing better that I would do on my birthday than celebrate time with lovers of God, spreading the glory of the Lord. इससे और ऊंचा celebration मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता. It was such a beautiful coincidence for me that there was a Gita Yoga on this day. You know? दूसरी बात कि मैं अभी प्रणाम कर रहा था अगर माँ को, तो एकदम याद आया. I was expressing my gratitude towards her because I told you years ago, 2 decades ago, सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके चरण स्पर्श करने का.
वो जब आती थी पहले वो फॉल्स चर्च में एक नॉट फॉल्स ग्रेट फॉल्स में एक फैमिली थी, उनके आती थी सुवर्णा राज सिंह या राजगुरु ऐसे कुछ उनके यहाँ। तो माधवी मोहिनी कान्हा एंड आई, तो कान्हा तो छोटा सा था, वी वर एबल टू सिट एट हर फीट, listen to her wisdom like personally, and she allowed us like deep, like very good quiet time in Charan Spot. So my head went to that birthday ke din to share my gratitude. So very blessed with this sparsha. इसका प्रभाव तो होता है गुरुओं के सामर्थ्य का, है ना? So last time we connected the second chapter with the 18th chapter, like sort of completing the arc of दूसरे अध्याय में जो कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, I had said as a reminder that is one of the, if not the most misunderstood श्लोक in the Gita, अधिकार शब्द को लेकर के, when everyone says well कर्म का अधिकार, if I don't get the fruit of labor then what's the point? ये कौन सा भगवान, ये कौन सा उपदेश है कि, है ना? Because it was misinterpreted, the word अधिकार was not meant as, you're right, it is meant as within your domain, within your control. In the 18th chapter, we elaborated on why is that adhishthanam tatha karta karanam. So we won't go back there again. लेकिन वो सब करने में समय हो गया था, है ना? So then we'll pick up here. Yogastha kuru karmani. This is number 48, second chapter. Yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya. ये भी special श्लोक है. सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा samatvam yoga uchyate. This is special because of its own meaning, but it is also special, I think I had said, because Shankaracharya, Adi Shankaracharya had lifted it up as one of his two anchor shloks. Yogastha Kuru Karmani Sangam Tyaktva Dhananjaya. वो जब 8 साल की उम्र में काशी के लिए निकल जा रहे थे शंकराचार्य जी, तो उनके मित्रों ने उनको रोकने का प्रयास किया था। माँ ने भी कहा था कि अभी न जाओ, you're too young, who will stay with me, all that. And his father had passed away by that time at such a young age. So then Shankaracharya reminded everyone that, do you not remember what father or dad has taught us in the Gita? Yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya. Okay, don't get too attached to your surroundings. Sangha is association. Tyaktva is detachment, letting go. You have to be able to let go in time. In time, when you are able to let go in time, it is sweet, it is glorified. जब समय से लेकर के जो काम हो उस समय शोभा देता है ना? अगर समय निकलने के बाद फिर प्रयास किया तो फिर जैसे मौत आती है तो फिर थप्पड़ मार के सब छुड़ा देती है ज़बरदस्ती। जो छोड़ नहीं पाता है इसको भगवान मृत्युश्चाहम 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं ही मृत्यु हूँ। भगवान कहते हैं, है ना, कि कृपा करने के लिए then I will pick you up and remove you from those circumstances. अगर तुम अपने बल जोर से नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन शोभा तो ही देता है जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, जो जॉब छोड़ने का समय आ गया, घर का, शरीर का, रिटायरमेंट का समय आ गया, जो भी जैसे भी आ गया, समयानुसार, if we align with the way of the world and follow that, then it is beautiful, right? If we align ourselves, जो शरणागति की बात करिए भगवान ने 18वें अध्याय में, शरणम व्रज कहा ना, मामेक शरणम व्रज, that is align with me. I know what I'm doing. If you trust me, the way the world is designed and the system is set up, and the laws, the universal laws, and the very fragile but very robust at the same time, the ecosystem that has been put in place, it works perfectly if you leave it alone and align with it. You are a part of the ecosystem. If you go with it, then everything will be beautiful. You will feel good inside. You will feel beautiful inside. That's when last time I was saying you will no longer need to seek मेहंदी का रंग हो, अच्छा लाली हो, लिपस्टिक हो, कुछ भी, बिकॉज द थिंग इज बाहर से कैसे भी दिखे, अंदर से इतना सौंदर्य का अनुभव होगा, बहुत सुंदर लगेगा। सबसे सुंदर तब लगता है जब हम अनअटैच प्रेम देते हैं। एंड यू टेल मी योर मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट्स दैट यू हैव एक्सपीरियंस, आई वुड एनकरेज यू टू थिंक अबाउट इट। यू फेल्ट द मोस्ट गुड व्हेन यू वर एबल टू सेल्फलेसली गिव। There cannot be a better way. It would not be when you're at a beautiful vacation spot, or when you're eating everything that you like, or when you're with your friend. The deepest beauty you felt was that of goodness, your goodness. You could not have felt better about someone else's goodness. Your goodness is what made you feel, and everybody has experienced that.
And goodness shines the most when we are the most giving, without any thought of receiving. This, by the way, is why mothers are held in the highest regard by himself. Bhagavan Krishna ne hi kaha. Because they're programmed, they are beautifully programmed to give and give selflessly, without any thought of receiving till the end. And this is why we have to respect mothers, whether that's in the form of our wives, or our own mother, or our sisters, or any woman who is capable of becoming, right, being a mother. So, although that's not in the Gita, that's my personal spin on it. लेकिन संगम त्यक्त्वा की जो बात चल रही थी, हम लोग जानते तो है, समझते हैं कि किस समय किस बात को छोड़ देना चाहिए. मॉडरेशन एवरीवन अंडरस्टैंड्स, है ना, कि मॉडरेट कितना देखना चाहिए टीवी, कितना खाना चाहिए भोजन, कितना घूमना फिरना चाहिए, कितना इकट्ठा करना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, इतनी भागा दौड़ करनी चाहिए. सब लोग समझते हैं मॉडरेशन का जब समय आता है. तो इस समय मॉडरेट जब हो, मतलब की बात हो गई हो, तो जो छोड़ पाए उसको लीव इट, देन दैट्स अ विनर. तो संगम त्यक्त्वा धनंजय, तो शंकराचार्य ने कहा, लुक दिस इज माई टाइम, आई एम यंग, आई एम एक्साइटेड, आई एम एनर्जाइज्ड, आई मस्ट गो टू सीक मोर नॉलेज टू काशी, इन काशी, है ना, आई मस्ट गो टू काशी. इसलिए उन्होंने याद करा के निकल गए थे आगे, और फिर उन्होंने हिंदू धर्म की फिर से ऊपर उठाया. तो योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म को त्याग करने के लिए नहीं कहा कहीं पर भगवान ने. दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, लोग समझते हैं कि भगवान ने काम करना छोड़ दो. इसके एग्जैक्टली उल्टा कहा भगवान ने, काम करना छोड़ ही नहीं सकते, तेरे बस की बात नहीं है. भगवान कहते हैं, यू डोंट डिसाइड वेदर यू विल वर्क नॉट, वर्क यू मस्ट, बट द अटैचमेंट टू द outcome, to the results, to what you want, what's in it for me, detach from the whiffum, right? Detach from what's in it for me. It doesn't matter what's in it for you. You perform your duty, that's what is in front of you, and then move on. Essentially, this message is to move on, continue, carry forward, if you want to reach your destination. तीसरा अध्याय जब हम शुरू करेंगे, इसके बाद तीसरा, obviously second के बाद third आएगा. That is Karma Yoga. What Gita is famous for Karma Yoga. Third chapter is Karma Yoga. उसमें भगवान कहते हैं, शुरू में ही कहते हैं कि कर्म शुरू किए बिना तो फिनिश नहीं कर सकता. Not common sense, right? Simple. If you don't even start working, then you cannot finish. But if you're not able to let go, then you will never get the full benefit of the work. जैसे हमें समुद्र पार करना हो तो जहाज में बैठे, अथवा भारत जाना तो एयरप्लेन में बैठे, कहीं जाना हो तो किस गाड़ी में बैठे, वो यात्रा शुरू किए बिना यात्रा खत्म होने का तो प्रश्न ही नहीं है ना. लेकिन यात्रा खत्म है, अभी मैं यहाँ पे आ गया 1:05 थिंकिंग 1:15 को सेशन है, तो जब मैं घर से निकला उसके बिना यहाँ पहुँच नहीं सकता था. तो शुरू करना, कर्म करना जरूरी था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसको छोड़ना भी जरूरी था. गाड़ी में अगर बैठे रहे, है ना, जिस वाहन से आए, तो उसका सफल तभी हुआ वो यात्रा जब मैंने उसको छोड़ दिया. भैया, है ना, देखो सब कुछ सृष्टि में डिज़ाइन ही ऐसा है. जो खाना, जो हम भोजन खाते, अभी प्रसाद खाएंगे, इफ यू गो टू द सोर्स, अन्नाद भवति, ये भी आता है भगवद गीता में. लुक एट द कॉम्प्रिहेंसिव स्पेक्ट्रम इन द गीता, हाउ कॉम्पैक्टली इट इज पैक्ड इन द गीता. अन्नाद भवति पर्जन्य, द रेन ड्रॉप से शुरुआत होती है. भगवान कहते हैं अन्न की. किसी फार्मर ने, किसान ने मेहनत करके ग्रू द क्रॉप. Somebody cleaned it, someone transported it, someone packaged it, someone distributed it, someone shelved it in the stores, someone went to bring it home, someone cleaned it, cut it, chopped it, cooked it, and then someone brought it here. I would encourage you to think about it. आज भोजन लेते समय हरि भोक्ता कहते हैं, हरि ही भोक्ता है, हरिर्दाता, हरि भोक्ता, हरिर अन्नम प्रजापति. ये भी वेदों में आता है, हरि सर्व शरीरस्तो भोक्ता भोजयते हरिम. There is a consistent thread that it's that the unified consciousness alone is flowing through this, as I am describing. Someone is, तो जब पानी गिरा मिट्टी ने, वो बीज के, तो the mother earth let go of it, तभी तो किसान ले पाया. किसान ने जब मेहनत करके कमाए, he had to let go of it, तभी वो कहीं दूसरी ओर जा पाया. The distributor had to let go of it. The one who shelved in the grocery store had to let go of it.
The father who went to the grocery store to buy it had to bring it and let go of it. The mother who cleaned and chopped it and cooked it has to let go of it. Now I will eat it. With my hands I will eat it. My hand will have to keep it on my mouth and let go of it. Right? अगर मेरा हाथ छोड़ने कोई खाली नहीं है तो उस कवर को तो जा नहीं पाएगा. My tongue will take it. My teeth will crush it. But they too will let go of it. The tongue will put it inside. Tongue will let go of it. The stomach will digest it, process it. Body will let go of it. And the cycle will continue. Khad bankar. Anything that's programmatically designed has to let go of it for it to fully manifest, for it to achieve its destiny. तो हमारे शास्त्रों में आता है, हिंदू शास्त्रों में, जो अन्न ग्रहण करते हैं उसके 7 प्रकार के धातु बनते हैं, 7 रस बनते हैं. एंड द हाईएस्ट रस जो मनुष्य जन्म में बुद्धि में तेज, वीर्य, ये अलग अलग नाम के रस होते हैं. द सत्व जो है अन्न में, वो हमारे बुद्धि में तेज प्रकट करता है. So the coding in it brings the knowledge, the wisdom to it. जिस प्रकार का अन्न तैसा मन, पानी वैसी वाणी कहते हैं. जहाँ का जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन होगा, जहाँ का जैसा पानी पिएंगे वैसी वाणी होगी. तो the point here is that letting go is central, is at the center of it, not collecting it. It should not be the central point of life. ये लाना उसके एग्जैक्ट उल्टा होना चाहिए ना. I tell my son, Kana is a senior now, that one sadhana is, one practice is that do the exact opposite of what your mind says. And you would not go very wrong. जो मन का ये करे तो उसके एग्जैक्ट उल्टा कर. Try doing it for a while. मन का इधर जाना तो क्या नहीं जाना है. मन का ये खाना है तो क्या नहीं खाना है. मन का अभी सोना है तो नहीं अभी उठना है. मन का है ना, तो try doing that. ऐसे ही तो बहुत साधना, बहुत प्रगति हो सकती है मन को. और सबसे बड़ा उसका प्रसाद ये कि मन सीधा हो जाए, फिर aligned, and the mind will start following then also. That's when you will drive your car where you want to go, instead of the car making like deciding where you want to go also. छठे अध्याय में आत्म संयम योग, ध्यान योग में एक बात आती है, योगा आरूढ़स्तदोच्यते. भगवान घोड़े सवार, गीता का वचन करे कि तो घोड़े पे जैसे आरूढ़ होकर घोड़े को तू ले जाएगा जहाँ, ऐसे ही योगी. Bits of Hindi okay, or should I? Okay, okay, good. I just realized that. But then that will give Bhaiya an opportunity जाते समय to share. I understand. Okay, great. तो भगवान कहते हैं योग के घोड़े पर आरूढ़ होना. That's when you go where you want to go. And the point there is कि घोड़े पे if you hold उसकी पूंछ अगर पकड़े, if you hold on to the tail of the horse, then it will drag you wherever it wants to go. लथड़े जाएंगे, hurt हो जाएंगे, है ना. Instead, if you sit on the horse and hold the reins, उसकी लगाम पकड़े, पूंछ नहीं पकड़े, that's when you are in control and go where you want to go. Arjun said, not be dragged. Right now, मन को पकड़े तो कैसे वो उसकी पूंछ पकड़े हैं तो उधर मन जहाँ ले जाएंगे, लथड़े जाए, है ना, जूते खाए, गाली गलौज खाए, जैसे रहना पड़े. So the message here is to once and for all climb the horse, take control of it. And the point is that without learning to let go at the right time, it's very hard, it's nearly impossible. And so this message is central, that Sangam Tyaktva Dhananjaya, Yogastha Kuru Karmani. Yoga mein situate hoke, stha is established, permanent. Once and for all, becoming a yogi, becoming established, becoming solidly anchored. जैसे जहाज जब एंकर हो जाए, तो बाल्टीमोर से 95 से जाते हुए दिखते हैं ना कहीं क्रूज शिप्स वगैरह, they're not like constantly swaying, they didn't go off on their own because they're anchored solidly. Like that, when the mind is anchored solidly, then you can live a body freely. Yogastha Kuru. Then Kuru Karmani. Then do whatever you have to do. Karma, Kuru. First situated, first anchor your mind in truth, then do what you must do. While doing whatever you're doing, remember that you do have to let go of the outcome. Don't do for the sake of the results of it. If you want to learn the way of yoga, Yogastha Kuru Karmani Sangam Tyaktva Dhananjaya, Siddha Asiddha Samo Bhutva. Siddha hona is fulfilled hona, complete hona, fruition. Whether or not you get the fruit of your labor, or whether or not it even fructifies. Siddha ho, asiddha ho, samo bhutva. Even-minded, even-keeled about whatever happens after you have
executed your samatvam yoga uchyate. So this is the first time in the Gita that God defines yoga. Samatva hi yoga hai, samata hi yoga kehlata hai. Even-mindedness, equanimity, equipoise is yoga. It's like just central theme put out there for the first time. Until that time, योग की परिभाषा mostly लेकर मन को, शरीर को लेकर थी. Patanjali Yoga Sutra was the central scripture related to yoga. Oh, bhaiya. So we're almost there. पतंजलि महाराज ने ऊपर बैठो, आपके बैक हर्ट होती है ना? Sure, no, please, कोई no formality. Okay. चित्त वृत्ति निरोधश्च, योग की पहले परिभाषा थी कि the one who is able to control the propensities of the mind is yoga. ऐसे पतंजलि महाराज ने डिस्क्राइब किया था. उनकी 8 the steps. पर भगवान कहते हैं one who is able to stay even minded, ever the same, no matter what happens. One who is able to stay the same, but conscious. Because again, I have to constantly remind the stone that's outside here, because before the Galatis bought the home, that stone was still there. Before the pilgrims came here, before the British, the stone was still there. When the Native Americans were there, and before that, the stone was still there. Ever the same. Not like that. Consciously being aware, है ना? जो सेम रह पाए वो योगी है. So इसको हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं. हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर. Asakti is like deep thirst, as agra, duragra, hut, zid, hekadi, and being stuck is asakti, and obstinate, stubborn. ऐसा ही पकड़ के रखना, छोड़ नहीं पाना. That asakti को त्याग कर. Right? That's the message. Unstuck. Not stubborn, meaning I'm very open-minded, very fluid, very inclusive, very adaptive. Then letting it be. अपनी ही पकड़ के, अपना नैरो विजन पकड़ के, ऐसा नहीं कि ऐसा ही है, इतना ही है. वी डोंट नो कैसा है और कितना है पूरा. ह्यूमन है ना, आइज से वी आर नॉट एबल टू सी द होल यूनिवर्स. ह्यूमन माइंड से वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन ब्रेन से वी आर नॉट एबल टू फुल्ली कॉम्प्रिहेंड द सिस्टम. सो वी आर नॉट डिजाइन टू फुल्ली कॉम्प्रिहेंड, बट वी आर डिजाइन, वी कैन फुल्ली ट्रस्ट, हैव फेथ दैट समवन डज, द डिजाइनर, द आर्किटेक्ट, द ओरिजिनल इंजीनियर हैज their goodness in mind, है ना. तो इसलिए अपनी जिद न रखते हुए आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्व भाव ही योग कहलाता है. समता. Does that make sense? Is it clear? Should we do one more slok or should we turn? Okay. So this all is phenomenal section, right? A few sessions ago, I had shared that we have taken off, right? Our plane is in the air now, yoga planes. We are actually flying, and so every shlok here is like a nugget. You pick the one that you like and run with it, and it will have its own effect. At some point, you should read the full Gita, and also take the time to fully understand it, the meaning. Ultimately, you would want to pick the most favorite part of the Gita for yourself. That will be different from what it is for me. Necessarily, as we're not all designed exactly alike. We're designed alike, but our mental propensities are not alike. हमारी यात्रा सबकी अलग अलग है ना. पति पत्नी की यात्रा भी अलग होती है, बच्चों की भी यात्रा अलग होती है. सभी जीवात्माओं की यात्रा अलग अलग है, बिल्कुल. And we're not able to change that because there's a momentum. देखो, जैसे बड़ी सी ट्रक 18-wheeler Big Mac is going on the highway, it has its own momentum. No matter what, you can, थोड़ा ये वो हो सकता है जब है ना, जैसे क्रैश होते हैं कभी. तो अगर यहाँ मेरे सामने से बिग मैक जा रहा है 18-wheeler at 60 miles per hour, मैं यहाँ पे खड़ा और मैं कर रहा हूँ, है ना, उसको फूक मार रहा हूँ. तो physics will inform you, those who have studied physics, I have, engineering, will inform you that it has an effect. This is the fact. मैं अगर फूक मारूँ उस ट्रक पर, so it has an effect, but it is infinitesimally small. It is minuscule, it is minor, it is imperceptible. It's not enough for it to be meaningful, but it has an effect. But that's a meaningful effect. As fathers and mothers, I want you to hold this vision. This has come up in other places also. I am maybe grihastha who
तो ऐसे ट्रक सामने से गया और मैंने फूंक मारने का फटाक से प्रयास किया, मेरे सामने 1 सेकंड के लिए रुका, तो ट्रक फिजिक्स से थोड़ा तो हिलेगा, कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं होगा, है ना, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे बच्चे जो आए हैं, है ना, वो अपनी यात्रा पिछले जन्म के अपना मोमेंटम लेके, दैट्स अ बिग मैक दैट हैज़ कम इन आवर लाइव्स, वी डोंट नो बट दे हैव देयर ओन डेस्टिनी, दे हैव देयर ओन जर्नी। हमें थोड़ा समय मिल गया, 18 साल मिल गए, उनके साथ 20 साल मिल गए फूंक मारने के लिए कि भैया थोड़ा इधर नहीं, इधर 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 से नहीं, इधर से जा, इधर से जा, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी थिंक इज द राइट वे टू गो। That truck, that massive vehicle has its own momentum, has its own journey in mind. Eventually it will reach. Every truck reaches eventual journey. Even if it crashes, the goods in it eventually will find a way to get to its destiny. So as parents, that's all we can do. That's all we should do also. We don't want to give up because again, fundamental laws inform us that it does have an effect. ऐसा भी नहीं कि उसका कुछ नहीं होता, लेकिन इतना भी अपने आप को बाप बनकर ये ना माने, माँ बनकर रहने की हम विद वी कंट्रोल, एज इफ वी कैन रियली कंट्रोल एनीथिंग, एज इफ उस फूक मारने से उस बिग मैक पे कुछ होगा क्या क्या, है ना। तो अपने उद्धार के लिए, अपने सीख के लिए, अपने विजडम के लिए, ये हमारी जर्नी है। उनको निमित्त करके सुधरने की, वो उनकी जर्नी है जिसे जितनी फूके होगी उन्हें लेकर के। सो फूक मार के जैसे छोड़ दिया ट्रक को अपनी यात्रा पे, वैसे ही प्रयास करके अपने बच्चों को छोड़ दिया। एंड सेम इज विथ हस्बैंड एंड वाइफ जर्नी ऑल्सो, है ना। ये बातें तो बहुत अच्छी है, साथ में है, संग 7 जन्म चले गए, वी विल नॉट रिमेंबर दो, एंड आई डोंट नो इफ यू वांट टू रिमेंबर, सम ऑफ अस, सम ऑफ यू मे बी, आई डोंट नो ऑल्सो, राइट। तो वो ठीक है, अच्छी बात है कहने के लिए, आई ग्लोरीफाई, इट्स गुड, इट इज़ वेरी गुड टू एक्सप्रेस लव इन एज मेनी ब्यूटीफुल फॉर्म्स एज पॉसिबल, दिस इज वन। But the truth of the matter is every soul has its own journey, and we met for a while, and every time consistently we want to spread goodness, we want to increase the value, we want to beautify the world, whether it's with our wives, with our children, with strangers, or with our enemies, है ना। That is the idea behind Siddha Asiddha Nirvikara. Bhagavan, Nirvikar is undiseased, undistorted, it's ever the same. Focus on my duty, never mind what you do with it, what you do with it. क्यों गुरु लोग तो ऐसा ही करते हैं ना, the guru there, they have left us alone, they've never stopped telling us the right thing to do, but they don't own it. ऐसे ही I will appeal to you that we cannot own each other's destiny, we cannot own each other's actions and outcomes, including our children, and also, but we fully own our own. No one else can say वो मेरे वजह से हुआ। We, as long as we're conscious, as long as सोच सकते हैं, we own what happens with us, and therefore our responsibility, our priority should be अपना उद्धार करे। आत्मन्येव आत्मनोतुष्ट, भगवान आगे 6ठे अध्याय में कहते हैं जो अपने द्वारा अपना उद्धार करे पहले, उसके बाद फिर दूसरे का, किसी का कुछ हो सकता है। So this was a loaded श्लोक। Next time we'll pick up on 49, जिसमें कहते हैं इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग को ही आश्रय ग्रहण कर, बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम अन्विच्य कृपणा फल हेतवः। सो कृपण शब्द जो संस्कृत में आता है उसका अर्थ कंजूस होता है, माइजरली। माइजरली इज ऑल्सो मिजरेबल, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मिजरी, है ना, जैसे मिजरी, माइजर, माइजरली, एंड आई जोक मिजूरी, दोज हू आर फ्रॉम मिजरी, because why they show me straight and show me the money. Misery was the golden art. That's when the gold rush started. Anyway, that's an inside joke. My cousin lives in St. Louis and I mess with him sometimes. So recently he started listening to Gita. I would have thought as the last person on the planet to take up the Gita, but lo and behold he did, and I hope he listens to this one too. So misery, miserly, miserable, ये सारे जिसे आते, कृपण शब्द है कंजूस, कृपणा फल हेतवा, सच्चा कंजूस, बड़े में बड़ा कंजूस कौन है, भगवान कहते हैं जो फल के हेतु से कर्म करता है, who always has some strings attached. कंजूस वो नहीं जो दे कम या रख के सबसे बड़ा कंजूस हुआ जो भी कार्य करे
उसके साथ कुछ न कुछ अपना जोड़ दे कि well then therefore I will get this or I want this out of this, I'm doing this so this will happen, क्योंकि पहले ही उसने गड़बड़ कर दी है ना. Even before starting whatever, काम करने के पहले ही उसने बंद कर दिया कि wow this is what I want out of it. कर्म तो खाली एक्सिक्यूट करने के लिए डिजाइन किया था भगवान ने. कर्म तो खाली पढ़ने के लिए, सीखने के लिए. कर्म was brought into our lives so we can learn. सर्व कर्म च अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते. आगे चल के भगवान कहेंगे कि सारे कर्म का उद्देश्य था ज्ञान. So you will learn lesson from it. Karma was created so you will learn the lesson by executing on it. The lesson is spiritual, right? Lesson is intangible. Lesson is not an object. Lesson is not a thing. Lesson is not something that someone can give you. But so you would learn. What did I learn after doing this? How am I growing? That's the purpose of any karma. How am I growing? How am I evolving? That is the spiritual evolution. We don't believe in physical evolution like Charles Darwin would say. We don't think we started as a monkey or usse pehle amoeba the or jo bhi. We totally know and believe that we were always, the human species is the highest of the physical evolution. Unki jagah wo mubarak hai. Our point is not to criticize scientists, but science has its place and the spiritual science has its own place also. We believe in spiritual evolution. Very central to Hinduism, in the Bhagavad, in the Puran, in the Gita, in the Upanishads, in the Vedas, there is a strong pillar consistent thread of spiritual evolution, that everyone is a spirit. The monkeys and the amoebas, that Darwin would say, are also spirit souls, as am I as a human. But the spirit is evolving through those forms by performing the duties in those forms that they're learning and they're realizing. And this form allows the highest realization, the truth in its most magnificent form about who I am and who everyone else and what's what and what is my purpose. So my spirit evolves. Never mind the body. I never was the body. It isn't about the body. But the spirit is evolving. And how? By learning lessons. How do you learn lessons? By performing your tasks flawlessly, selflessly. You continue to learn. And therefore, कर्म योग की जो बात आती है, तो हमें कंजूस अगर न बनना हो, इसके बाद कभी कंजूसी का, तो then we don't want any strings attached. Do what you want to do for the sake of it, and not attached to it. So we'll pick up here next time on Shlok 50. Sounds good? Chalo. Jai Shri Krishna.